हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि हमें बुबागरा की तरफ से एक कॉल आया है। वो है कि हमें वहाँ पे जाके बुबागरा के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और जो बुबागरा को नहीं पहचानते, वो है त्रिपुरा के महाराजा। उनका नाम है प्रद्योत किशोर माणिक्य। और उन वहाँ से हमें कॉल आया और हमें बोला कि वहाँ पे हमें जाने का, उसके साथ इंटरेक्शन करने का हमें मौका मिला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और वो आज होगा, आज हम जाएंगे, इसलिए मैं रेडी हूँ। और वो है माणिक्य एनक्लेव पे होगा। और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि वहाँ पे क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, और कैसा क्वेश्चंस होगा। मैं आपके साथ वो शेयर करती रहूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और ये ब्लॉग फुल देखते रहिए आप लोग। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव अ लाइक। एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। लेट्स गो। सो फाइनली हम अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी इनवाइट किया गया है। सब आए हैं मे बी। और ये जगह ही हमारा रिसेप्शन हुआ था। और यहाँ पे जो भी आए हैं उन लोगों का यहाँ पे ऐसे मार्क किया जाता है। तो हमने भी लगा लिए यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी कॉफ़ी पीते पीते, बिकॉज सुबह हम उठ के सीधा हमें आना पड़ा, इसीलिए हम घर पे कॉफ़ी भी नहीं पी पाए। और ये है कश्मीरी मेरे बहन। और यहाँ है शांतनु जो है मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड। हेलो एवरीवन, सो फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। और तुम लोग आज क्या कर रहे हो? आज हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो इवेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं कि इवेंट का जो, क्यों नहीं बता सकते? मुझे खुद पता नहीं कि इवेंट स्पेशली अच्छा, क्या होने तुमसे वाला बात करना ही बेकार है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग गैदर हुए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे है जो यहाँ का लाइक जो मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये लगाया गया है सो दैट हमें मतलब पता चले कि हम यहाँ पे आए हैं। सो अभी तक नहीं आए हैं बुबागरा, जो कि है महाराजा, तो अभी तक नहीं आए हैं वो। तो हम यहाँ पे बाहर में वेट करें। तो बहुत सारे सोशल वर्कर्स और ऐसे ब्लॉगर्स हैं और रिपोर्टर्स हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, आज का प्रोग्राम मैं आप लोगों को पूरा दिखाती रहूँगी और आप लोग देखते रहना। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं अंदर में। तो यहाँ पे सब बैठ गए हैं। सभी वेट कर रहे हैं। different walks of people. Some of you are from NGOs, some of you are YouTubers, some of you are content creators, and some singers also. To have all of those, he'll obviously give a speech. You guys can give him some questions. सो फाइनली अभी आ गए हैं हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट, जो है कि होंगजियोंग पार्क, जो साउथ कोरिया से है वो। और मुझे साउथ कोरियंस बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे उन लोग का ड्रामास देखना। और आज फाइनली हमें मौका मिला है कि उसको लाइव देखना, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और वो एक ब्लॉगर है, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई हूँ उससे कि एक ब्लॉगर ऐसे मतलब ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उनको हमने देखा। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए जो है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो अभी हमारे बीच आ गए हैं हमारे बुबागरा प्रद्योत किशोर माणिक्य। और आज पहली बार मैं उनको ऐसे मतलब रियल में देख रही हूँ, ऐसे इतने करीब से। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच बुबागरा फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरेक्शंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली बुबागरा का टाइम नहीं था तो हम नहीं बोल पाए। बट हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश है कि बुबागरा हमसे इतने करीब आके हमारे साथ बात किया, हमारा प्रॉब्लम्स को समझा उन्होंने, हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अभी जो हमारे कोरियन गेस्ट हैं उनको हमारे ट्रेडिशनल अटायर मतलब रिगनाई और रिशा पहनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और वो लोग जा रहे हैं अभी चेंज करने, मतलब उनको पहनाने। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे हमारा आज का इवेंट स्टार्ट हो।
and young achievers for coming. Actually, the agenda of this meeting is, this event is to discuss heart to heart with Maharaj. Where do we see our Triprasa or as a citizen of Tripura after 5 years, 10 years? Where do we see ourselves? So please share your suggestions. You can give your feedbacks. I give the stage to Maharaj. Should I speak in English or Hindi? English. English? Well, I don't know how to speak English. So I'm not going to be very formal. First of all, thank you all. Thank you everyone from the media team to have organized this interaction. I think you all already know who I am. Yes, Bubagra. So you all call me Bubagra, somebody calls me Pradyot. I have no problem with titles or names. Eventually, names don't make a person. नाम आदमी को बनाता नहीं है. हाँ, of course you have an advantage if you are born in a royal family. Advantage is there. But then many people are born in royal families also. Many people are born in rich families, big business families. But it's not what you are born with, but what you do with your life, which makes you judged at the end of your day. Am I right? Yes. So first of all, nobody should feel, when I go to Delhi, every time I meet people, they will say, "जानता मेरा बाप कौन है?" वो 40 साल का आदमी हो कि अभी भी बाप के नाम पे जिंदा रहते हो। लेकिन इसी के लिए आज अभिषेक बच्चन फ्लॉप हो गए। बाप के नाम पे कब तक चलोगे? But to be very honest, I wanted to meet everyone, not just the Prasas. There are Bengalis here. There are people from India from the LGBTQ community. There are people from minorities. I think it's very important to not isolate yourself when you have an honest discussion. People may, there are musicians, I can see some musicians there. There are writers, people who are into different personalities. I know somebody who keeps on donating blood right there. Yes, I know, see, I know. आपका फूल से मैं जानता हूँ. The fact is that no use isolating yourself. And it's very important to understand that you learn as you grow older. Older does not mean 35, 40, 45, 50. Even for someone who is 22 years old, you can learn at 23 what mistakes you did at 20. So I wanted to have this interaction. I will not speak very much. I know that many of you are very fond of me. Many of you think I'm a very bad person. Some people hate me also. I get that in trolling in the Facebook and all that. And to be very honest, no one is perfect. No one is perfect. And I admit that I'm the last person who should claim to be perfect. I have made so many mistakes in my life. I have made a lot of mistakes in my life. I've hurt people. But then I've also realized that along the way, I've tried to change things. Change is good. Not change is good means आज कांग्रेस है तो कल बीजेपी हो. वो अलग change. Change also means try to improve yourself. Try to understand why somebody is disagreeing with you. Don't push your idea to someone who may not agree with you what you say. Respect their opinion. When I was young, I used to like Dharmendra. I used to like Dishu, all that. Oh, KGF. Violence, violence, violence. I hate violence. The violence loves me. I cannot. Now I prefer Mandela. Now I prefer
for something called Gandhi sir. When we were young, हम लोग बोलते झंडा लेकर सामने जाओ, show who you are. But today, when I see our Korean friend Myochi wearing a rinai, a traditional dress, when she was in Bombay, she was putting on a bindi, I think that is our real power. You know what is the real power? It is not aggression. India will never be an aggressive country. But India will always be an influential country because our food is so good. Our music is so, if there's a wedding in America, Bhangra music chal. Our poetry is so good. Everybody knows Kavi Guru. Our clothes, our food, our way of life. India will always be a cultural capital of the world. We will never be like Donald Trump's superpower. I'm sorry, Jeff, I'm sure you vote for him. But we are not known for atom bombs and nuclear bombs. We'll be known for how to influence the world with the way we are. You look at a small country like Korea, because we have a guest here. We talk about Samsung, Korea, Hyundai, Korea, K-pop, BTS. Right? All this. Everybody knows what Saranghe means. Right? I know we are stereotyping it. We all, also the best stereotypes are with Bhangra. How are you? We are very good. That is also Indian stereotype. But the fact is that the world has started noticing. You look at North Korea, people are scared. South Korea, people of football. So there is something called soft power. Now we are Tripura, they are a small state. People say, why are you demanding military platform? बाद में आएगा. वो भी serious topic है, ठीक है? Tripura is not known for Tripura is known for its culture. Whether we believe it or not, mention has been made in Mahabharata. Our Tripura Sundari temple is there. Our food is there. Whether it was R.D. Burman, S.D. Burman, whether it was Somedev Burman, whether it was the Maharajas. Tripura has been there for 1,000 years. Today, what is Tripura known for? Political violence, intolerance, corruption. I'm sorry, आप लोग MDC से लेकर corruption है. नहीं बोल रहा कि आप लोग हैं, लेकिन सच्चाई है कि है कहीं सिस्टम में तो करप्शन है. So we are going for all the wrong things. How do we improve that? We can only improve it if the young generations, people like you, start actually being given an opportunity. Politicians लोग क्या बोलते हैं, मेरा एक सपना है. सपना आपके बारे में बात नहीं कर रहा. कहाँ सपना है? चलिए. सपना का मतलब होता है I have a dream, but my dream cannot be bigger than your dream. I am already 40 plus. Your dream is more important. You will shape where we will go in the next 10 years, 15 years. And it's very important for your dream to become reality. I've noticed one thing. I've been in power for almost 2 years now in ADC. I've realized one thing. Be it Bengalis, Manipuris, Tiprasas, anyone. People are very good at it. आप लोग ईमानदार हैं, सच में. You are good people, simple also. Problem is our leaders. हम लोग का leaders ना, इनको कोई ने फॉर्मूला सिखा दिया है कि यही ऐसी तरीके से राजनीति करो तभी आप पावर में आओगे. So the problem with us is our leaders. And why is society throwing out such bad leaders? Because anyone who can become an engineer or a doctor or a lawyer or a IS officer, civil service, they will apply for that. Anyone who gets no chance in any of the field,
The most unqualified person is entering politics. And then the system is such that politicians control everything. Media, sometimes they say judiciary, I'm not sure, but they say so. And if you control media, judiciary, and civil society, then you are Bhagwan, you are God. But if you go abroad, I've seen the Prime Minister taking a train and going to office in European countries. I've seen there is no VIP culture. I feel very uncomfortable with a security dabang type. If you see me in the airport, I'm carrying my own luggage, I'm doing on my own. Because this culture that you are special is the worst thing. That's why I said, you may be special because you are born in a family, but it does not make you special if you don't behave humbly and if you do not have arrogance. Arrogance is the worst enemy of us. And my dear friends, all of you, I have not come here to give you a speech. I want to hear from you. Maybe I'll be not successful in helping you, but I can try. कोशिश तो कर सकता हूँ. अगर फेल हो गया तो चलो, फेल हुआ. लेकिन nobody can question me that he did not try. I see my friend here, K9. These people, you saw Danny and Shillong, my dogs. You haven't seen my dogs. These people, they got me such lovely dogs, all abandoned. High pedigree dogs. स्टेटस के लिए हमने कुत्ता को रखा. जब मैनेज नहीं कर सका था रास्ता में फेंक थे. ये तो हम लोग का प्रॉब्लम है. हम लोग स्टेटस के लिए बहुत फाइट करते हैं. We are sad inside, but we'll take a selfie and say power. We don't have any money in our pocket, but we will go outside H&M showroom and say bags. Why are we lying? Food line. Oh, restaurant mein food has got thanda, you're taking 50 cents. Something has happened where we want to show to the whole world we are happy when we are not. My point is, it's all right to be sad, but it's important to accept that you are sad and you have to improve things. It is all right to say that there is something wrong in our system, there is something wrong in our society, but let us now try to sit down and improve it. And the day we say that I am right, I am not going to listen to the other person, while you may be right, the other person still has a point of view to say. I don't agree with many things Rahul Gandhi says, but I do agree that नफरत को हटाकर अगर हम प्यार को थोड़ा एम्ब्रेस करेंगे तो बहुत चीज, हर चीज तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बहुत चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए. पीछे में आप लोग ये प्रस्मित लोग, टोनी लोग, टिकट चाहिए आपको इलेक्शन नहीं चाहिए, ठीक. अगर नहीं भी मिला ना, आप तभी भी वही रहेगा मेरे लिए. अगर किसी ने आपको शाहरुख खान बोला, आप शाहरुख खान नहीं बनने वाले. लेकिन किसी ने अगर आपको अमरीश पुरी बोला, आपको अमरीश पुरी भी आप नहीं बनने वाले. आप जो हो, improve yourself. And my only advice to all of you, I have seen a bit of life. I have seen a lot of life actually. I got our guest here, Myochi from Korea. You know what happened to her? Yes. She got very badly abused in Bombay on a live stream. I immediately reached out. We got those idiots arrested, first of all. She's in our country. She's a guest. It ruins the reputation of our country. But then you know what she said? I don't judge one bad person with the whole country. There are rotten apples. There are rotten apples everywhere. But you don't judge everyone. But today she is here in our Tripura. And we have given her love all. Whether it was the Tiprasa, the Bengalis, Manipuris, Hindu, Muslim, Christian, everybody has said, can we take a selfie? You're so happy, this, that. Now she will go back and speak about her place. And I think that is how we should be portrayed.
not through a hatred or a aggression, but by a hospitality. And I think that is the basic quality we all have in our state. So please, you all are the future, but every politician says you are the future, but it has nothing for you. I want to take your ideas, suggestions, and probably put it up in my own manifesto, and maybe also, agar God willing, if we do come somewhere, at least try to make an impact. We should not be ashamed of who we are. You may be straight, you may be gay, that's your choice. We are no one to judge you that you are perfect or imperfect. You may belong to any religion, that is your personal faith. You may ask for your rights, and very rightly you should ask for our rights. But that does not mean that you take away somebody else's rights. So, with saying all this, I hope I have not bored you. Have I bored you? कुछ गलत बोला? सर कुछ गलत बोला? No. So, by saying all this, you are a musician. I can see Rumi there. I can see, I don't know who else are musicians. Somebody else? Only Rumi. So, I want you to ask me questions. Ask me tough questions. I have no problem. And if I can't, अगर मैंने कुछ गलत भी बोला, अगर आपको satisfy नहीं किया, ठीक है. लेकिन at least मेरे सामने कोई script नहीं है. I don't have a script in front. And at least I am not speaking what somebody has told me to speak. I ask you again, don't be afraid, be brave, but be honest. And most importantly, be honest to yourself. You all are all wonderful people. Our people are simple, honest. The people of Tripura are very nice. Problem lies in people like us who have taken politics and who have only tried to divide people and not bring in any solution. Solution can only happen if you talk freely and frankly. I love all of you all. Do you love me? Yes, Bubagra. God bless you. When I say love, it means honest love. You can see that also. There's no problem. I love all of you all, and I really hope that we can go a step ahead today. एक Rome wasn't built in a day. एक दिन में कुछ बनता नहीं है, लेकिन एक दिन अगर हमने एक दूसरे की बात सुनी तो कुछ बिगड़ता नहीं है. Thank you. You have any questions? You are most welcome to us. I think person was on time. Right. Thank you. Thank you. Awesome NGO. Awesome. Yes, of course. I know. We work together. Yes. K9 there are riders. Yes, sir. We used to love birds. Yes, sir. We work for the welfare of animals. So, firstly, I'd like to thank you for welcoming us to this event. We are extremely happy and privileged. So, sir, my question was, we all know you're an animal lover yourself, you're a dog lover, you have already adopted a Labrador from us, sir. So, if you can recall, yeah. It's very bad. Yeah. So, my question was, in a general way, how to see, like, uplifted the animal welfare as a whole in the world? See, can I be very honest? The first thing I want to do if I ever come to park is to open up an animal shelter with at least 20 to 25 kanis of land, because you need movement of animals. Also segregation not only of dogs and cats because they are understood as domestic pets, but even we have horses which are kept in a very bad condition, not maybe in other parts. And you're talking about pets, but I saw somebody I know who's done something with elephants. If you go to Kailash and Dharmanagar and all, it feels so sad. हम लोग गणेश भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन look at the way we treat animals. If we can even create a wildlife sanctuary where we can actually, these old elephants who have been, if we can give them maybe 100 acres of space where they can move around, water, I think we'll not only promote tourism, we'll also find a way of actually looking after our pets and wildlife. Having said that, also culling of street dogs is very important. And I think the government, what we've done is we've only engaged with government doctors. And unfortunately, motivation is lacking in many cases.
So if we can engage NGOs to actually participate, because you guys are very. I remember during COVID, you were giving food to street dogs. Everybody said, "Arey, कुत्ते के बारे में सोच रहे हो, इंसान का क्या हो रहा है?" But the fact is, they are part of our society, and I think I'll again repeat it. My sister once wrote in her diary, "The more I know men, the better I like dogs." Right? They are loyal. They are. I mean, cats are there too. And I think it's very important that we as a society also appreciate the environment around us, and especially though, I'll give you an example. You know why I love people so much? You know why I love people? हम क्यों कितना प्यार करते जानते हैं? जब मैं बच्चा था तो मेरे पास हमेशा एनिमल्स रहता था। तो मैंने दूसरे चीज थे, जीव जंतु, उनको मैंने प्यार करना बचपन से सीखा। They say if you keep pets in your house, children automatically develop love and empathy. If you keep a fish in your house and the child goes and drops food in the fish, you automatically start that affection. And I think that's very important. So I think definitely, I mean, it's a no-brainer, Ritvik, and to K9 also, and Possum, it's a no-brainer. If I ever come to park, I may be accused of a lot of things, but animals, definitely, even Maneka Gandhi will have a problem keeping up with me, because I really love animals. I think it is very important. I think it's therapy also to love others more than just your own race. Sir, I had one last thing to say, sir. We, Possum organization, we have been working for last 9 years for Manipur itself. So now we are hoping to reach to other districts as well. So as because we conduct all these awareness programs related to animal protection laws and everything. So we want your support and your guidance, sir. You want my support? Yes, sir. Then support me to come to park. Yes, surely, sir. Because one it's personal support, but there is a lot of money in the government. The only problem is that the money is not reaching the right people. And the right people it has to reach cannot be only government. If you can privatize Air India, if you can give away polo towers to, government property to polo towers, why can't you also work with private NGOs to look after the welfare of animals? Absolutely, I agree. Everything cannot be government controlled. It has to be a public-private relationship to reach to the masses. I agree. Thank you. बनाने के लिए सर मुझे हेल्प चाहिए, मतलब स्पॉन्सर चाहिए, मतलब खेलने के लिए उधर चाहिए सर, लेकिन अभी हमको सपोर्ट नहीं मिला सर। मुझे तो आगे जाके खेलना है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सर। एक बार सर मैं मेरा पर्सनली कुछ बोलता हूँ सर, मैं एक हेल्प के लिए गई थी सर, एक मिनिस्टर के लिए सर। मैं एक न्यूज़ वाला भैया के साथ गई थी, तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन मेरे से पेपर वर्क करवाया सर, बोला मुझे कि फुली उनका स्पॉन्सर देगा जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी सर 2021 को, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, फुली स्पॉन्सर देगा सर। लास्ट मिनट में क्या हुआ सर, कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे सर। मैंने खुद का लेके खेला सर, मैंने 2 बार इंटरनेशनल खेला सर, वो मैं खुद का मतलब घर से मैं लेके खेला सर। इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद का घर से मैं देके खेल सकूँ सर। ये मैं मतलब क्या करूँ अभी, मतलब आगे बढ़ने के लिए सर क्या? मैंने अभी कहा था कि गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड फंड मतलब कि एक हर साल समझिए कि 50 करोड़ स्कॉलरशिप में रख देना चाहिए, और ये मेरिट बेस्ड होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरा भांजा का दोस्त है, उसको कहीं और जाना है तो उसको दे दो, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए और मेरिट बेस्ड होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला है कि आज त्रिपुरा का बजट जानते हैं कितना है? त्रिपुरा का बजट कितना आप जानते हैं? 26,000 करोड़। पैसे की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम सबसे पहले खुद खाना चाहते हैं और आपके बारे में कम सोचते हैं। एक कहावत है कि a good leader always eats last. What happens is that we always think about eating first ourselves. तो ये अगर मैंने कानून बना दिया तो कानून के बाद कोई भी लीडर है, कानून को हटाना बहुत मुश्किल होगा।
तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते मैं आऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं आऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा और तब कोई और आएगा वो फिर से वही गलत करते रहेगा। लेकिन अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिया या स्टेट लॉ बना दिया, एक कानून बना दिया, एक आयन बना दिया कि हर साल इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में जाएगा, कि हर 3 साल बाद इसका 5% 10% आप बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि आप जैसे जो मैंने जैसे कहा कि पीपल लाइक यू विल क्रिएट बिगर लीडर्स। देखिए त्रिपुरा में हमें गरीब रखने का एक पूरा प्लानिंग है। मैं आपको सच बात बोलता हूँ, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, लेकिन ये पूरा सोसाइटी का रिलेटेड है। अगर आप लोग सब गरीब रहेंगे, इफ यू आर ऑल पुअर ना, तब मैं आपको 100 रुपए देकर हाथ में बोलूंगा मेरा पार्टी का फ्लैग लो और बोलो आई लव यू या लाल सलाम या इनकलाब, ठीक है। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया ना, आप पॉलिटिशियन के पीछे भागना बंद कर देंगे। और यही चीज पॉलिटिशियन नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन आपके पास काम करने का दूसरा रास्ता आ गया या आपके पास पैसा है, आप उनके दफ्तर में 3 दिन जाकर बैठेंगे नहीं, अर्जी नहीं भरेंगे। तो ये चाहते हैं कि आप लोग गरीब रहे और ये लोग भगवान बनकर रहे। मैं उस सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। जब मैं ये सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ तो मेरी ही पार्टी के लोग भी बहुत लोग हैं वो डर जाते हैं। लेकिन अगर आपका सपोर्ट है, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, तो मैं थोड़ा सा बिना डर के मैं कुछ करना चाहता हूँ कि कोई भी बोले यार इसने तो कुछ किया, इसने हमारे लिए तो कुछ किया। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये सिर्फ आपका कहानी नहीं, बहुत लोगों की कहानी है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आने के बाद पहले 3 महीने 4 महीने के अंदर, क्योंकि 4-5 महीने के बाद क्या होगा सब बिगड़ जाते हैं, लेकिन पहले 4-5 महीने में अगर हमने कानून बना दिया तो वो कानून को सबको मानना पड़ेगा। और अगर माना नहीं तो आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और रहा आपका पर्सनल चीज, जैसे मैंने इनको प्रॉमिस किया, मैं आपको भी प्रॉमिस करता हूँ। You are a girl, you doing so well. I think you know, if women come up, it will also inspire men to stop taking drugs and sitting on their grounds. So this is good. I will, if you can become a role model. Prasun, take a number, हाँ? And आपका नंबर ये नोट कर लेंगे और उसके बाद मैं कांटेक्ट करूँगा। आप मुझे भी थोड़ा सिखा दीजिए, आप मुझे भी थोड़ा मुझे सिखा दीजिए, ठीक है? मैं भी थोड़ा सा लाभ So everyone here has talked about sports and talk about business. So I'm here to represent technology. So the thing is that everyone has technology in their hands, the palm of their hands, they have phones. But the thing is that it is limited. What they can do with the phone is limited. So I want to know if there is a plan for teaching technology to the younger kids in schools. Suppose if we enable the students from younger age with the technology, with laptops, computers, so they can do many more things. There's more things, it has more capabilities. Like I'm doing work from home, and I'm doing work for Bangalore and Gurgaon. That's okay. Yes. See, if you heard what I said, if you hear all my speeches, बकरी देते, सुअर देते, हमको लैपटॉप देते, yeah. Why am I saying that? Because if you give technology to a small child or to a youngster, then he or she can become equipped with the rest of the world. Today, it's not only developing technology, it's again I bring up our guest from Korea. She's doing live streaming and and she's earning from it. So technology, the world has changed. And it is very important for our people in the school level. I'm saying even straight from class 5 to 6 to be taught technology. And that's why I'm saying that information technology. See, the problem is most of our leaders are 70 years old, 65 years old. They don't understand technology. And when they don't understand technology, they don't appreciate what is a smartphone. I have noticed some politicians in the private sector in the phone पकड़ रहते हैं। उनके पास फोन भी नहीं, ईमेल खोलना नहीं जानते। आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करिए, ईमेल खोलना नहीं जानते। उनका ट्विटर अकाउंट
the moment that happens, you have an option. You learn how to do coding, you learn how to use computers, and then that's how you progress in life. The world tomorrow, the next business will not be based on physical. Even Modi ji talks about digital transaction. But if you don't know how to use digital phones, if you're not knowledge in digital media, how do you progress? So I completely concur with you, and we have a clear policy that we have to digitize all our schools, all our colleges, all our preschools also. Even e-learning has to be done through digitization. Today, Byju's is doing so well. E-education is doing so well. You don't need to have a physical presence at all times. You need to have digital knowledge as well. And that's what makes the children more effective. So, I am in agreement with you, we have that. Yes. If you want to change the system, then you have to have someone younger who understands all this. Yes. Otherwise, you have the same old process. So that's what I would expect that our children and even your admit cards should have a barcoding. If you can go into an airport and do a barcoding and get into a plane with high security, then why can't students be given admit cards when there is a barcode instead of you waiting in your house, come I have admit card, come here, have it that way. Digitize it. It is much better. Bubagra, there is something very serious that we want to discuss with you. Can you give us 2 minutes? Yes, I will give you 2 minutes, 3 minutes. Okay. Thank you so much. And I don't know if I'll be able to fulfill all your dreams and promises, but one thing I can guarantee is I will try. It's better to try and fail than to have never tried at all. Thank you. I love all of you all. I really love all of you all. And I hope that one day, irrespective of who you are, Tiprasa, Bengalis, Hindus, Muslims, Christians, we all become more successful than what we are today. Thank you so much. God bless. तो फाइनली यहाँ पे बुबागरा जा रहे हैं और उनका फ़्लाइट है तो बहुत ही लेट हो गया उनका, बट स्टिल बुबागरा वाज सो हम्बल टू आंसर एवरी क्वेश्चन. मतलब जितने भी लोगों का प्रॉब्लम्स था उन लोगों के प्रॉब्लम्स सुना और सॉल्यूशंस दिए, और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उन लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर करने के लिए अप्रोच लिया, और बुबागरा इतना हेल्प करते हैं लोगों के लिए. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ, एंड सभी आ गए हैं बाहर. तो महाराजा बुबागरा चले गए हैं और जो गेस्ट आए थे कोरिया से ब्लॉगर है वो, तो वो भी चले गए हैं. और यहाँ पे अभी होगा आई गेस लंच, एंड आफ्टर दैट विल गो. तो यहाँ पे सब सर्विस के लिए सभी यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे होगा हमारा लंच. एंड ये है डाइनिंग और वहाँ है हाथ धोने के लिए, और ये है वो हॉल, साइड का डोर. तो ये है दाशंकर और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. पिक्चर्स लिया और उनका एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है. फाइनली तो यहाँ पे मैं बहुत खुश थी कि मैं दाशंकर के साथ फ़ोटो ले पाया. तो अभी लंच का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हम ले रहे हैं राइस. और मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ दो और थोड़ा दो, बिकॉज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया और अभी ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं. तो मैं बहुत भूखी थी और रात को भी इतना कुछ नहीं खाए स्पेशल, तो इसीलिए. और यहाँ पे है ये है दाल. तो उस दिन का मेन्यू मुझे बहुत अच्छा लगा. दाल और है बैंगन का क्या बोलते हैं उसको, बैंगन फ्राई. और यहाँ पे लाइन में है दाज्विंगली, वो भी अभी राइस ले रहे हैं. और हाँ, बैंगन का वो फ्राई मुझे मिल गया, बैंगन फ्राई. और ये है गुदौक, हमारा ट्रेडिशनल खाना. और यहाँ पे है चिकन. देखने ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अभी भी खाने का मन कर रहा है मेरे को. और हाँ, मुझे अच्छे अमाउंट ही दिए हैं इन्होंने. और यहाँ वहाँ पे जाके हम बैठेंगे अभी. तुम्हें कौन सा बहुत अच्छा लगा? दाल, गोदक. अच्छा, और मुझे सब अच्छा लगा. थैंक यू.
सो हे गाइस, अभी हम जाके आए हैं इवेंट पे और आज का इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस किए लोगों ने और हमारे प्रॉब्लम्स को जैसे सॉल्यूशंस दे रहे थे बुबागरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही मैं फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसे ही बहुत सारा इंटरेक्शन सेशंस रखे यूथ के साथ, बिकॉज यूथ इज़ आवर फ्यूचर। और ऐसे ही इंटरेक्शंस होने से बहुत अच्छा है, बिकॉज हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वैसे ही हमारा मे बी फ्यूचर में हमारा यूथ का हेल्प होगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन्स का हेल्प होगा। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेन जो थीम था तो वो था कि आप त्रिपुरा को 5 या 10 साल में कैसे देखते हो। तो वही हमने बहुत प्रपोजल्स एंड तो हमने बहुत सारे प्रपोजल्स और सजेशंस दिया है उनको कि किस किस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी की तरफ से हमारा त्रिपुरा कितना आगे बढ़ सकता है, वो मैंने सजेस्ट किया। और लोगों ने स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बात किया, और उसके बाद स्पोर्ट्स, बिजनेस, हाँ, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट बहुत बिजनेस, सारे हाँ, आइडियाज के बारे में डिस्कस हुआ। एंड हाउ त्रिपुरा मोथा और बुबागरा कैन हेल्प अस त्रिपुरा से एंड द होल त्रिपुरा। तो यही बात किया है हम। तो उन्होंने वही बोला। हमें अच्छा लगा, महाराजा ने हमें टाइम दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस बुबागरा। Thank you so much Yeah, again thank you to so the much organizers, again to Bubagra, everyone. खुलुम का जतन। खुलुम खा, बाय बाय। सो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड होपफुली फ्यूचर में ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। सो बाय बाय गाइस।